कैसे हो? How are you all? I am not that great, just existing. वीकेंड कैसा गया सबका? Good, as usual. Quest full weekend. My God, Akansha, that was a goal. कॉलेज के असाइनमेंट्स कर लिए तुम लोगों ने? कॉलेज की काफ़ी सारी डेडलाइंस आ रही है ना, फाइल सबमिशंस एंड ऑल असाइनमेंट्स. अच्छा, how many of you have completed the first quest? And drop a yes or a no. I have, yeah, I haven't. बोर बहुत है, बफरिंग है, कोई बात नहीं. अभी भी एक दो मुंह दिख रही है मेरे को. व्हाई इज दैट? काफ़ी टाइम हो गया. ग्रेट. संजीव, दीक्षा, अनु है. प्रियांशी अभी तक कर ही रही है. ग्रेट. अंजलि कंचन. अनएबल टू डू टास्क 3, कैन यू शो वंस? एक काम करते हैं, इस मीट के बाद डिस्कॉर्ड पर आ जाएंगे. इफ़ यू वांट यू कैन प्रेजेंट योर स्क्रीन और देख लेंगे. कर लेना, कोई नहीं, आज रात तक कर लेना. विश्वास अंशिका. बट पाइलअप मत होने देना. आज भी हम 4 लैप्स करेंगे, तो वो भी करनी है. ग्रेट कशिश. अच्छा, आई हैव सम अनाउंसमेंट्स टू मेक. एक बार 1 मिनट रुक जाते हैं. लेट्स वेट फॉर another minute or two. Then I have some exciting announcements to make. I would say, Aisha, approximately 1 hour or 1.5 hour, considering um you watch these live sessions properly, you understand everything, how to do everything. And then yeah, so अब हमारा प्लान ऐसा हो गया है कि we will be having live sessions on alternate days. So on odd days, on odd dates, like today is 5th October.
So on 7th, 9th, 13th, I will be taking live sessions. और इवेंट डेट्स के लिए आई हैव गिवन रेफरेंसेस, प्रॉपर लैब के सोल्यूशंस दिए हुए, यूट्यूब रेफरेंस दिए हुए in the schedule that I sent yesterday night. तो or you can say today morning. तो या आज वालों में तो लाइव सेशंस में यू शुड ओनली कंट्रीब्यूट लाइक एन आवर, मैक्सिमम आवर और एन आवर एंड अ हाफ खुद से. बाकी जितना लैब का ड्यूरेशन है उसका हाफ कर लो when we don't have live sessions. तो non live sessions में lab duration का half time we would have to give, because that is how much time you take ना. मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं वो लैब्स. उन्होंने बफर दिया हुआ है टाइम का, ज़्यादा टाइम गिवन है. यू डोंट नीड दैट मच टाइम टू कंप्लीट द लैब. ये टोटल कितने क्वेस्ट करने हैं? हमने दोनों ट्रैक्स के एक एक कर लिए हैं. सो अभी 10 बचे हैं एंड वी आर प्लानिंग टू फिनिश देम बाय 21st October. This program, cloud program, will run till 27th October. So 6 days का बफर हो जाएगा. If some of you lose track of the time या फिर कुछ situation arises because of which you are not able to complete the lab, तो वो 6 days का बफर है. उसमें आई होप सबके हो जाएंगे दोनों ट्रैक्स. 11 quests actually, 71 labs and 11 quests are. दी जब तक क्वेस्ट कंप्लीट नहीं होती अनएनरोल्ड क्वेस्ट रेड में ही रहेगा. आई गेस अनएनरोल इन क्वेस्ट का करना भी क्या है, जब तुम्हें एनरोल करके स्किल बैच मिल गया है तो क्या करोगे अनएनरोल करके? दी कैन यू प्लीज शिफ्ट द टाइम फ्रॉम 7 PM? इट्स नॉट suitable. We shifted to 5 PM. See, Vanshika, many people have coaching from 5 to 7. A lot of people have coaching. So that's why we can't do that. MWF is preferred. MWF वाले को बाद में देखते हैं. एक आई थिंक मूवी फॉर्म फ्लोट करवा देंगे. यू गाइस फिल योर प्रेफरेंसेस. MWF की TS मेजॉरिटी जो होगी उस दिन हम लाइव रखेंगे, वरना रिकॉर्डिंग तुम बाद में देख भी सकते हो. बट कोई बात नहीं, ये पोल करवाते हैं हम. या नॉट 5, डोंट वरी. ठीक है, how many people are there? I think let's start. I'll make the announcements first और फिर हम labs पे quickly move on कर लेते हैं. The first thing is there was a form floated. A form was floated, for GCP group leads. So we will be dividing all of you in groups of 5. Each group will contain around 22 to 23 students. एंड इन ग्रुप्स का एक एक लीड होगा. तो वो लीड हमने पिक कर लिए हैं. वी विल मेक द अनाउंसमेंट शॉर्टली आफ्टर दिस लाइव सेशन. एंड उन ग्रुप लीड्स के अंडर जो जो स्टूडेंट्स हैं उसकी भी लिस्ट रेडी है, वो भी आई विल शेयर विद यू गाइस. सो द की बेनिफिट हेयर इज, ग्रुप लीड के बेनिफिट्स ग्रुप लीड को बता दिए जाएंगे. But for you guys who did not get to become the group lead, we have this thing. We are planning कि जो top 10 students होंगे from each group. So we're talking about top 50 from within all of you. So आप लोगों को these top 10 who finish both the tracks, all the quests of both the tracks, मतलब सबसे पहले इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, इन 10 स्टूडेंट्स को या 50 स्टूडेंट्स को इन टोटल, GDSC कालिंदी कॉलेज विल गिव प्रेफरेंस इन कोर टीम रिक्रूटमेंट एंड अपकमिंग इवेंट्स टू. सो देर आर अ लॉट ऑफ ग्रेट प्रोग्राम्स. जैसे आपको पता है एंड्रॉयड भी आने वाला है, ML भी आएगा, क्लाउड साइबर सिक्योरिटी और काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, DSA प्रोग्रामिंग एंड समथिंग. तो
like I am the facilitator of Google Cloud, आगे और फैसिलिटेटर्स बनेंगे और स्टूडेंट्स उनके अंदर एनरोल होंगे जस्ट लाइक यू, तो इन सब चीज़ों में उन लोगों को रेफरेंस दी जाएगी. एंड इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूज कॉम्पिटिशन हेयर, a lot of students apply, so yeah. So top 10 within each group who complete both the tracks first, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी. एंड आई विल शेयर द group list with all of you. So there are around 22 to 23 students in each group. तो काफ़ी अच्छे odds हैं, अगर आप टाइम से इन लाइव सेशंस को अटेंड करो और हमारा शेड्यूल फॉलो करो, तो देर आर नाइस चांसेस कि आप you get into that top 50 position. Right. Apart from that, yeah, I shared the schedule. I'm gonna present my screen now. I hope you all can see my screen. Can you see my screen? Yeah, great. Great, great. So live sessions, as I said, for now, will be taking place on odd dates. So 5th, 7th, 9th, and कौन-कौन सी लैब्स हम कवर करेंगे वो भी लिखे हुए हैं. Uh, नीचे यू हैव द ट्रैक लिस्ट और कौन कौन से क्वेस्ट है और एक एक लैब का यू हैव द लिंक. सो आई विल शो यू. यू कैन ओपन द लिंक और जहाँ पे लाइव सेशन लिखा हुआ है मतलब हाँ वो हम लाइव सेशन में कवर करेंगे. एंड जो हम लाइव सेशन में कवर नहीं करेंगे एडजस्टिंग डेज में, वो उनके यूट्यूब रेफरेंसेस गिवन है. सो या दिस वाज अ थिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि ये जो यूट्यूब रेफरेंसेस है ना, सी वी आर गोइंग टू डू 4 लैब्स पर डे. तो आपको जो भी इश्यूज आते हैं, जो भी डाउट्स आते हैं, फील फ्री टू पोस्ट ऑन डिस्कॉर्ड. यू कैन टैग योर ग्रुप लीड. तो आप अपने इंडिविजुअल ग्रुप लीड से डाउट्स क्लियर करेंगे. लेट्स से आपके ग्रुप लीड को भी वो डाउट क्लियर करना नहीं आ रहा है, दे ऑल्सो डोंट नो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, देन आई विल स्टेप इन एंड सॉल्व ऑल ऑफ योर डाउट्स. बट फॉर नाउ ग्रुप लीड्स विल टेक चार्ज. they will manage all of your queries. ठीक. तो you have to complete these YouTube reference वाले labs and report to your group leads that yes I have done this. ठीक. Let's and yeah, one more thing. Uh, so whenever we start with a new quest, make sure you sign into them and then enroll in the quest, because many of you don't enroll in the quest and you keep on solving the labs and you say दीदी मेरा check mark नहीं आ रहा, this green check marks भी नहीं आ रहे. This won't come until you don't sign in the lab, in the quest. Let me see. So ये है ना, sign in and saying enroll. So this enroll का button है, you need to enroll in the quest and then start doing the labs. और इससे भी पहले you need to sign in. तो यहाँ पे
हाय गाइस, आर यू देयर? आई एम सो सॉरी, मेरे घर की लाइट चली गई यार। यहाँ पे ना बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है। आई जस्ट connected again with my hotspot. Uh, can you hear me and can you see my screen? I'm not gonna turn on my camera because लाइट चली गई है तो पूरा रूम अंधेरे में है. Uh, yeah, you're here. Wait. Can you share this PDF of link? I did share it. I shared it on the Discord group, on the WhatsApp group, on the Telegram group. My voice is breaking. Okay, just bear with me. My light just came. I'm gonna switch to my Wi-Fi. Just a minute, guys. Just a minute. अभी चला नहीं है. चलो कोई बात नहीं. In a minute or two, I'll switch to my Wi-Fi. Yeah. I was talking about this ना. इन सब में साइन इन करके enroll करना and then start with the labs. So आज we're going to talk about this second quest, perform foundational infrastructure task in Google Cloud. एंड इसमें भी वी आर गोइंग टू डू दी स्टार्टिंग की 4 लैब्स. सो ये और वाले ऑप्शन में हम नीचे वाली लैब्स नहीं करेंगे, जस्ट स्टार्टिंग 4. आई होप आई एम स्टिल कनेक्टेड. Can you see my screen and hear me? I'm not audible. Cool, great. यार पता नहीं क्या हो गया, लास्ट मोमेंट लाइट चली गई. चलो कोई बात नहीं यार, बहुत डिले हो गया. स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लैब स्टार्ट करते हैं. पार्डन मी यार अगर मेरी वॉइस ब्रेक हो या फिर थोड़ी सी स्क्रीन ब्लर हो जाए, बिकॉज हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है. दिस लैब इज गोना आल्सो टेक टाइम. अरे यार, चलो. तो क्लाउड स्टोरेज फर्स्ट हमारा यही है. फर्स्ट लैब विल टॉक अबाउट क्लाउड स्टोरेज. एंड क्लाउड स्टोरेज करेगा क्या, मतलब क्या करता है? इट अलाउज वर्ल्ड वाइड स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ एनी अमाउंट ऑफ डेटा एट एनी टाइम. सो मतलब आप काफ़ी डिफरेंट सिनेरियोज के लिए क्लाउड स्टोरेज यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल फॉर सर्विंग वेबसाइट कंटेंट, या फिर आपको आर्काइवल डेटा स्टोर करना है, या फिर डिज़ास्टर रिकवरी वाला डेटा स्टोर करना है. तो इन सब चीज़ों के लिए वी यूज़ क्लाउड स्टोरेज, एज यू ऑल नो वेरी वेल. एंड या हम यहाँ पर इस लैब में वी विल टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट अ बकेट एंड देन अपलोडिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द बकेट, uploading objects on the bucket, शेयरिंग ऑब्जेक्ट्स पब्लिकली, क्रिएटिंग फोल्डर्स. और हाँ, एक दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे. राइट, लेट्स मूव ऑन. आई होप यू कैन स्टिल सी माई स्क्रीन. मैंने क्विक लैब खोला हुआ है. कैन यू गाइज सी इट एंड कैन यू गाइज हेयर मी?
चलो, ग्रेट। एक्चुअली बिकॉज मैंने भी फ़ोन में यूट्यूब खोला हुआ है एंड मेरे पास लैग होके आ रहा है सब कुछ, आई डोंट नो व्हाई। सो कूल, लेट्स स्टार्ट विद द लैब। uh, we have to open this in incognito mode. So let's start. By the way, ये four labs are very interesting. मतलब they're very easy to and very interesting. So और हाँ, इसमें ना MCQs भी आएंगे. So uh, listen to me very carefully and try to understand all of this. Okay, what is happening? Great. Uh, Opening this in incognito mode. Next. Uh, Password. वाह, मैंने बंद कर दिया गलती से यार, अच्छा हो गया यार, बैड लक। Great. Uh, let's go ahead with our first task. We have to create a bucket. तो bucket, तो first of all bucket क्या है? Bucket is just a basic container जो hold करता है आपका data in Google Cloud Storage. So to create a bucket, we have to go to navigation menu, cloud storage, and browser. So let's go there. Uh, Navigation menu, cloud storage. Cloud storage browser. Right. We press on create bucket. Yeah. और हर स्टेप में वी हैव टू क्लिक कंटिन्यू। तो पहले तो प्रोजेक्ट बकेट नेम आएगा। सो बकेट नेम जो है, इट इज़ अ यूनिक नेम फॉर योर बकेट एंड इट हैज़ टू बी यूनिक बिकॉज इट इज़ मतलब ग्लोबली एक्सेसिबल। सो it is global and publicly visible, so you have to make sure that you don't put some sensitive information in the name of the bucket. This is very important. So क्योंकि ये unique and global है, we have our GCP project ID, which is also unique. So let's name the bucket with this uh, project ID. Yeah. So name this project ID. Continue. There are three or four more. मतलब there is like एक naming convention given है कि what you should and should not put in the name of your bucket. So you go ahead and read this on your own. We're not gonna cover this. Um, let's just move on with our labs. Region, we have to put US East 1, South Carolina. Region for location type is this. I think this was already given. Uh, hold on.
Standard for default storage class, uniform access control. Okay. Standard रीजन है इसमें यूएस ईस्ट वन साउथ कैरोलिना ऑलरेडी गिवन था. स्टैंडर्ड फॉर स्टोरेज क्लास एंड access control was uniform only, no? Yeah, uniform access control. Continue. And then we have to hit create. That's it. हमारी bucket create हो जाएगी. So while it's loading, what was a bucket? It was nothing but a basic container that holds your data. Cool. Um, let's work on this MCQ जब तक हमारी bucket create हो रही है. So every bucket must have a unique name across the entire cloud storage namespace. True or false, guys? Chat पे. True, true, true. Wait, true. Correct है. Cloud storage offers which storage classes? Archive, standard, cold line, nearline. I think we skipped this. This is my fault. Just a second. I'll show this to you again. अगर हम क्रिएट बकेट में वापस जाते हैं तो उन्होंने कहा कि कौन से स्टोरेज ऑप्शंस वो हमें ऑफर करते हैं. सो लेट्स सी, एक और क्रिएट बकेट में एग्जांपल लेके देखते हैं. दिस इज द स्टोरी और डेटा ना, तो नॉट दिस. सो या स्टैंडर्ड किस लिए है? इट इज बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज एंड फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा. Nearline similarly, it is best for backups और data access less than once a month. उसके लिए हम Nearline यूज करते हैं. Cold line हम यूज करते हैं disaster recovery के लिए and data access less than once a quarter. Quarter is 1/4 of a year. Yeah, once a quarter of a year. And archive मतलब long term preservation of data के लिए which is access less than once a year. So standard, nearline, cold line, archive. हमारे ऑप्शंस आई मीन सारे ही हैं. सो ग्रेट, हमारा टास्क 1 हो गया. आई एम जस्ट गोना हिट कैंसिल. हमारी जो बकेट बनी थी हमारी प्रोजेक्ट में कौन कौन सी बकेट्स है वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे. सो करेंटली वी हैव दिस बकेट. इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है. जस्ट वट एवर वी फिल्ड, लोकेशन ये है, लोकेशन टाइप ये है, डिफॉल्ट स्टोरेज स्टैंडर्ड डाली थी. एंड हम बकेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बकेट की डिटेल्स भी आ जाएंगी. सो अभी करेंटली वी डोंट हैव एनीथिंग इन द बकेट. सो वी आर गोना अपलोड एन ऑब्जेक्ट इनटू द बकेट. या तो हमें फिटिंग की इमेज अपलोड करनी है बकेट में. सो वी आर गोना राइट क्लिक ऑन दिस, सेव इमेज एज, एंड इसको तुम kitten.png कर देना. kitten या या फिर .png में डालो, नीचे ऑलरेडी फाइल टाइप स्पेसिफाइड है. आई ऑलरेडी हैव दिस. तुम बस सेव का बटन दबा देना, हो जाएगा वो डाउनलोड. Now in the cloud storage browser page, we have to click the name of the bucket that you created. We already did that. In the objects tab, click upload files. Okay. Objects tab में click upload files. We're gonna upload kitten.png. So yeah, you have to upload kitten.png. Make sure उसका name यही है. If not, you can press the 3 dots icon of your file and rename it. I'll show you how it is done.
या हमारे पास kitten.png फाइल आ गई. बाय चांस अगर तुम्हारा नेम ये नहीं है, सो यू कैन प्रेस दिस 3 डॉट्स एंड यू कैन रीनेम द फाइल. तो हो गया ये हमारा. एंड या एज यू कैन सी, अब यहाँ पे किटन फाइल की सारी डिटेल्स आ गई. इसका साइज कितना है, टाइप ऑफ द फाइल, व्हेन इट वाज क्रिएटेड, इसका स्टोरेज क्लास, ये सारी डिटेल्स आ चुकी हैं. सो लेट्स चेक द प्रोग्रेस. पूरा सही हो गया. Object names must be unique within a given bracket. This was not specified earlier. This is an object. What we uploaded is an object. So कुछ भी file, if you upload a text file, PNG file, image file, whatever it is, they're saying this is an object and object name must be unique only within a given bracket. What do you think? Is it true or is it false? Chat में drop whatever you think, guys. Okay, Kashish is true. She is saying true too. Anyone thinking false? चलो ट्रू को ही लेके चलते हैं फिर. Yeah, it is correct. Now, if we want to share this object publicly, what do? We have to click the permissions tab above the list of files. Uh, okay, permissions tab in above the list of files right here. And we have to, the public access box, click remove public access prevention. Okay, public access box में click remove public access prevention. Confirm this. Then public access is no longer prevented for this object. Ensure the view is set to members. Click add to view the add members pane. Okay. We have to ensure that the view is set to members. तो हमें add members pane में जाके एक role add करना पड़ेगा. New members में we have to enter this all users. We have to select at least one principal. So cloud, we have to select cloud storage object viewer. ठीक है, हम परमिशन असाइन कर रहे हैं टू ऑल यूजर दैट दे कैन सी दिस इमेज. सो हम क्या परमिशन दे रहे हैं? दैट दे कैन सी द स्टोरेज ऑब्जेक्ट, दे कैन व्यू द स्टोरेज ऑब्जेक्ट. राइट, हो गया. एंड इसके बाद वी हैव टू confirm it. Okay, save and allow public access. हमने पब्लिक एक्सेस क्रिएट कर दिया. सो लेट्स सी. वी कैन क्रॉस चेक दिस कैसे कि पब्लिकली एक्सेसिबल है या नहीं. लेट्स गो बैक टू ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स में जाके आई थिंक वी नीड टू रिफ्रेश दिस. हाँ, पब्लिक टू द इंटरनेट आ गया. एंड यू कैन जस्ट कॉपी दिस URL and
Go to a new tab, paste it. You can see this kitten image. How cute. तो हमारा task is completed. Now we have to create a new folder. अपने bucket के अंदर we have to create a folder. So in the objects tab, click create folder. So objects tab में create folder. We have to name this folder 1. अब हम folder 1 में जाके एक सब फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड वी विल नेम इट folder 2 एंड हम folder 2 में फाइल्स अपलोड करेंगे. So again we have to click, we are in folder 1, so let's create another folder called folder 2. अब हम folder 2 को क्लिक करें, हम उसके अंदर आ गए एंड वी हैव टू अपलोड अ फाइल. So what they're saying is you can upload any file, कोई भी टेक्स्ट फाइल या फिर कोई भी फाइल अपलोड कर दो. In the file dialog, navigate through the screenshot. अच्छा, let's upload this kitten file only. तो kitten वाली भी image डालने के लिए we have to click this upload files again. kitten.png. kitten.png upload and डन. हमने एक फोल्डर क्रिएट करा हमारे जीसीबी इस बकेट के अंदर एंड we have to go here. Okay, let me go back. ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है. And this is happening because of my Wi-Fi. Yeah, this was our bucket ना. तो इस bucket में क्या क्या contents है. अब there should be हाँ एक folder 1 and this image. folder 1 के अंदर भी we have folder 2. Yeah, folder 2 and folder 2 के अंदर we have the kitten image. ठीक है. Now we have to delete the folder. So we're just gonna select that folder और delete button दबा के we have to type confirmation के लिए this delete in all caps. तो वो permanently folder delete हो जाएगा. So going back here. Yeah, we have selected this now. इसको select करके hit the delete button and you have to click this in all caps. Make sure you don't include the quotes too. Just type delete and hit delete. तो ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा. एंड डन. हमारी एक लैब हो गई. सारे टास्क कंप्लीट हो गए हमारे इस लैब के. सो व्हाट वी डिड वाज वी जस्ट स्टोर करने के लिए डेटा. हाउ डू वी स्टोर डेटा ऑन क्लाउड. वी क्रिएटेड अ बकेट एंड उसमें हमने देखा कि फोल्डर्स कैसे बनते हैं.
फाइल्स कैसे अपलोड होती हैं, फोल्डर्स कैसे डिलीट होते हैं, दैट्स इट, एंड हाउ यू कैन एक्सेस देम पब्लिकली. सो या डिलीट हो गया. यहाँ पे सिर्फ वो किटन वाली फाइल बची है. लेट्स एंड दिस लैब. आज ना क्विक लैब्स पे ग्लिच कर रहा है. मेनी ऑफ यू नोटिस दिस आई गेस. ये यहाँ पे एंड लैब का बटन दबा के ये लैब एंड नहीं हो रही है, टाइमर इज स्टिल गोइंग ऑन, बट व्हेन यू गो बैक ना यू सी अ टिक मार्क ओवर हियर. तो अगर वो टिक आ रहा है ना, सो यू कैन जस्ट सिंपली क्लोज दिस टैब. तो आज ये मेरे साथ भी हुआ, टिक मार्क्स आ गए थे तो आई जस्ट क्लोज द टैब. ओके, लेट्स मूव ऑन. अब हम सेकंड वाला देख रहे हैं. सेकंड लैब इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. किसी को याद है IAM क्या था? कैन यू राइट वट एवर यू रिमेंबर what is IAM, क्या होता है, whatever you guys remember, anything related to it. If you don't remember, just write no or I don't remember. Yeah, it is identity and access management, but what is that? IAM is used to control the access permissions to various users and control their roles. Exactly. On spot. IAM is used for that only, just uh, to control the access permissions and roles of all the and control their roles of various users. यार ये लैब नहीं चल रही यार, क्या हो गया? Let me refresh it. अरे क्या मिस हो रही है मेरा? अरे oh my god. Why is this happening? इस वाली लैब में तो यार चाहिए भी था. Let me just make sure if my Wi-Fi is back on.
My brother is saying Wi-Fi is slow. I'm just gonna switch to that. I hope you guys can still see my screen and hear me. Okay, this is not working. Why isn't it working? Okay, fine, let's try that. Let's move on with the third lab. We'll come back to the second lab. Arey yaar, what is happening? Wait. Functions lab. Nearly I am back. आई एम सो सॉरी गाइस, हमारा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है इसके चक्कर में. हम जस्ट गोना ट्राई एक दो बार और. अगर होता है तो ठीक, वरना आई विल शेयर रिसोर्सेज ऑफ दिस लैब. मैं यूट्यूब लिंक्स शेयर कर दूंगी, यू कैन सी दैट एंड देन वहाँ से देख के कर सकते हो. आई एम सो सॉरी यार. एक तो पहले नेटवर्क इशू हो गया, उसके बाद क्विक लैब्स का इशू आ रहा है. हाँ खुशियाँ, 4 लैब्स होनी थी. ओह फाइन फाइन, चल पड़ा. गाइस आर यू स्टिल देयर ना? कहीं ऐसा तो नहीं छोड़ के चले गए? ग्रेट यार, ग्रेट. आई एम सो सॉरी अगेन. देखो, IAM lab में we have 2 usernames and only one password and one GCP project ID. So um, यहाँ पर ना we are going to see कि ये roles and accessing certain things, how does this work, roles and permissions का क्या काम होता है and how does it work. So इन्होंने एक ID दी है जिसके पास एडिटर रोल्स है लाइक BigQuery और स्टोरेज एक्सेस रोल्स है, एंड दूसरी आईडी के पास सिर्फ व्यूअरशिप के रोल्स हैं, तो वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकता. तो वी हैव टू ओपन द क्लाउड कंसोल एंड सबसे पहले यूज़र नेम 1 डाल के हमें ये पासवर्ड यूज़ करना है. सो लेट्स गो अहेड विद यूज़र नेम 1.
पासवर्ड दोनों का सेम ही है। फॉर दिस लैब ना आई एम गोइंग टू डू दिस, स्क्रीन्स डिवाइड कर देती हूँ मैं ऐसे। अरे यार बट ये तो आएगा नहीं, आई विल चेंज दैट लेटर। ठीक है, वी आर गोना, ये मैं पहली वाली लैब का लिंक बंद कर देती हूँ अभी। And now we have to sign in with the other ID. So the second username and password. Great. ये हमारा फर्स्ट यूज़र नेम का है और ये सेकंड यूज़र नेम वाला है। और लेट्स गो डाउन, सेकंड यूज़र नेम वाला था। Okay, occasionally a user is overwritten in a browser tab or you may be confused about it. How can you check कि तुम्हारा यूज़र नेम कौन सा है, मतलब because we're opening two यूज़र नेम्स वाला ना, तो you can just click on this icon and confirm through here। तो ये देखो ये 136 है यहाँ पे, and I'm just gonna expand this once again, and 136 हमारा फर्स्ट यूज़र नेम था। और यहाँ वाला जो था इट इज़ 973, ऑटोमेटिकली 973 हमारा सेकेंड यूज़र नेम का है। बट लेट्स से कि देखो अब हमारे पास चॉइस भी आ रही है यहाँ पे 136 वाला की, कभी कभी ना ओवरराइट हो जाता है, कोई और यूज़र नेम वाला खुल जाता है अकाउंट, सो यू कैन जस्ट साइन आउट एंड साइन इन बैक अगेन, दैट्स व्हाट देयर सेइंग। सो लेट्स रिमेंबर 136 वाला जो था दैट इज द फर्स्ट यूजर नेम। ठीक है, नाउ यूजर नेम 1 पे जाके वी हैव टू गो टू नेविगेशन मेन्यू, IAM एंड एडमिन एंड IAM। सो दिस वाज द फर्स्ट यूजर नेम 136 वाला, नेविगेशन मेन्यू, IAM एंड एडमिन, IAM। लेट्स ऐड अ रोल। तो ऐड रोल करने के लिए वीर सिंह की रोल्स कैसे ऐड होते हैं। सो यहाँ पे आप कुछ भी नेम डाल दो, बट आप यहाँ रोल्स देखो, बेसिक में आपको 4 रोल्स दिखेंगे, ब्राउज़र, एडिटर, ओनर एंड व्यूअर। सो व्हाट आर दीज रूल्स, इफ़ यू गाइस रिमेंबर हमने वेरी फर्स्ट लैब में इन रूल्स के बारे में बात की थी। दीज आर कॉल्ड प्रिमिटिव रूल्स, या ब्राउज़र, एडिटर, व्यूअर, एडिटर एंड ओनर, दीज आर कॉल्ड प्रिमिटिव रूल्स। एंड इनकी क्या क्या परमिशंस होती हैं, व्यूअर के पास सिर्फ रीड ओनली परमिशन होती है, एडिटर कैन चेंज एनीथिंग, मॉडिफाई एनी स्टेट, या ओनर के पास 2-4 और परमिशंस होती है, दे कैन सेट अप अ बिलिंग अकाउंट एंड दे कैन मैनेज रोल्स एंड परमिशंस फॉर अ प्रोजेक्ट। सेम ब्राउज़र के पास कुछ परमिशंस होती हैं। सो दीज आर योर प्रिमिटिव रूल्स। हमने ऐड का बटन था ना, वी डिडंट क्रिएट एनी रूल, वी जस्ट हिट कैंसिल और हम वापस आ गए हैं। अभी अगर हम यहाँ देखें, सो यू कैन सी कि ये हमारा यूज़र नेम 1 है। हाँ, यूज़र नेम 1 वाले को ऐप इंजन एडमिन के रोल दिया हुआ है, बिग क्वेरी एडमिन है, मतलब ये एडिटर, ओनर, व्यूअर यहाँ पे। बट यूज़र नेम 2 के पास सिर्फ व्यूअर रोल है, तो वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। सो व्हाट देयर सेइंग इज यहाँ पे कि अब यूज़र नेम 2 के कंसोल में जाएं
और अगर हम यहाँ पे एडमिन IAM खोलें, IAM एंड एडमिन एंड देन IAM, यहाँ पर ये खोलें, यहाँ पे भी यू विल सी द सेम थिंग अगेन। यूजर नेम 2 के पास व्यूअर रोल है और उस 1 के पास ये ऐप इंजन बिग क्वेरी है। अब हम यहाँ पे ऐड का बटन नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे पास एडिटर रोल है ही नहीं, तो हम कुछ मॉडिफाई कर ही नहीं सकते। सो सी दिस ऐप रोल ऐप बटन इज नॉट वर्किंग, इट सेज यू नीड परमिशंस। Oops. It says you need permission for this action. तो जब तक यूजर नेम 2 के पास एडिटर रोल नहीं आएगा, they can't change anything. Let's switch back to username 1 and let's create a bucket over here. So bucket के लिए navigation menu, cloud storage, browser. Let's do this. Navigation menu, cloud storage, browser. Create bucket दबा के we have to specify these values और बाकी की जो भी values होंगी वो default ही रहने देंगे हम। So name, it should be globally unique. तो कुछ भी name डाल दो. Again, I would suggest just go ahead with your project ID. Project ID. Continue. यहाँ पर what did they specify? Location type should be multi-region and just continue, continue, continue and create. That's it. ये हमारी bucket create हो गई। अभी यहाँ पे ये messed up होके आ रहा है, अगर मैं इसको expand कर दूँगी तो you will be able to see it properly. अब हम इसमें फाइल अपलोड करेंगे। सो देयर सेइंग कि यू कैन अपलोड एनी टेक्स्ट फाइल और HTML फाइल, व्हाटएवर यू वांट टू अपलोड। उसके बाद तुम उसको रीनेम भी कर सकते हो, तो यू कैन रीनेम इट टू दिस। व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज तुम्हारी फाइल का नेम ये होना चाहिए टू ट्रैक द प्रोग्रेस। सो आई डायरेक्टली मेड अ टेक्स्ट फाइल, डाउनलोड्स, मेरे डाउनलोड्स में थी वो फाइल। जस्ट राइट क्लिक दबा के न्यू एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उसमें फाइल का नाम मैंने सैम्पल डाल दिया था, तो ये sample.txt ऑलरेडी मेरे पास क्रिएटेड है। सो लेट्स अपलोड फाइल सैम्पल। अभी द फाइल इज गेटिंग अपलोडेड, हो गया sample.txt अपलोडेड। या इफ़ यू अगर तुमने कोई और फाइल अपलोड कर दी है, उसको रीनेम करना है, सो अगेन 3 बटन्स दबा के क्लिक द रीनेम ऑप्शन। सो लेट्स ट्रैक द प्रोग्रेस। नाउ देयर सेइंग कि यूजर नेम 2 कंसोल में जाके लेट्स सी कि हमारे पास बकेट कैन वी सी द बकेट और नॉट, बिकॉज हमारे पास व्यूअर का रोल है। सो आइडली वी शुड बी एबल टू सी द बकेट। तो लेट्स गो बैक, cloud storage and browser. Yeah, we can see the bucket. ग्रेट, हमारे पास क्रिएट बकेट का ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि अगेन हमारे पास सिर्फ व्यूअर रोल है, नॉट एडिटर। रिमूव प्रोजेक्ट एक्सेस, ओके। गोइंग बैक टू यूजर नेम 1 कंसोल, सिलेक्ट नेविगेशन मेन्यू IAM एंड एडमिन एंड देन IAM। सो ये हमारे यूजर नेम 1 का था, IAM and admin and then IAM. Great. They're saying remove project viewer access for username 2.
by clicking the trash can icon next to the role name. Okay, ये ऐसे नहीं दिखेगा. I would have to expand this. ये हमारा यूजर नेम 2 है, 91973 जो व्यूअर है. सो they're saying click the trash can icon. हमने पेंसिल आइकन दबाया एंड देन व्यूअर रोल है, देयर इज द ट्रैश कैन आइकन. डिलीट दिस रोल, हिट सेव एंड यू सी कि वो गायब ही हो गया. मतलब यूजर नेम 2 तो यहाँ से चला ही गया. तो वाई, बिकॉज उसका कोई रोल बचा ही नहीं. अब उसके पास एक रोल था व्यूअर का, वो भी हमने डिलीट कर दिया, तो फिर वो यहाँ पे रहेगा ही क्यों. मतलब तो इट गॉट रिमूव्ड टोटली. स्विच टू यूजर नेम 2, इंश्योर दैट यू आर स्टिल साइंड इन. अगर साइन आउट हो जाते हो तो वापस से साइन इन कर लेना. एंड गो टू नेविगेशन मेन्यू, क्लाउड स्टोरेज ब्राउज़र. यू शुड सी अ परमिशन एरर. अगर हम इसको रिफ्रेश करें ना, अब तो हमारे पास व्यूअरशिप का भी रोल नहीं है, तो हम देख भी नहीं सकते. सो लेट्स रिफ्रेश दिस. यहाँ पे एक एरर आना चाहिए. आया नहीं अभी. ये रहा. एडिशनल परमिशंस रिक्वायर्ड टू लिस्ट बकेट. मतलब बकेट देखने के लिए भी यू नीड द व्यूअर परमिशन. लेट्स चेक द प्रोग्रेस. अब ये फाइनल टास्क है. वी हैव टू ऐड स्टोरेज परमिशन. तो यूजर नेम 2 को हम वापस से कुछ पोजीशन दे देते हैं, कुछ रोल दे देते हैं. तो गोइंग बैक टू यूजर नेम, they're saying कि यूजर नेम 2 को कॉपी कर लो. I'll just copy it from here. और यू कैन ये जो कनेक्शंस डिटेल्स का पैनल था, वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो. गो बैक टू यूजर नेम 1 और आई एम एन एडमिन में जाके IAM एंड देन क्लिक दिस ऐड बटन. यहाँ पे इसका नेम पेस्ट कर दो एंड देयर सेइंग सिलेक्ट अ रोल में गो टू क्लाउड स्टोरेज. क्लाउड स्टोरेज में जाके स्टोरेज ऑब्जेक्ट व्यूअर, हिट सेव. तो हमारा ये यूजर नेम 2 अब ये स्टोरेज ऑब्जेक्ट व्यूअर बन गया है. लेट्स वेरीफाई कि इसे दिख रहा है अभी या नहीं. अभी नहीं दिखेगा. हमें कमांड क्लाउड शेल एक्टिवेट करके एक दो कमांड्स डालनी पड़ेंगी एंड देन यूजर नेम 2 शुड बी एबल टू सी द बकेट. तो ऑथराइज तो करना इम्पोर्टेंट ही है. जी क्लाउड ऑथराइज्ड. अब we have to paste this command gsutil lsgs और तुम्हारा bucket name. So remove this and हमारा bucket का name था this project ID. So going back, I'll paste this over here. You should have a similar output. Sample text आ रहा है. What is it showing? Access denied exception. Did I miss a command? अच्छा नहीं हो गया. I think I would have to expand it.
I don't know why it's not showing that sample.txt, but आ जाएगा. You guys can see it. And later on when you'll refresh it ना, refresh this page, तो यहाँ पे वो भी आ जाएगा, bucket. So let's just leave this because काफ़ी टाइम हो गया यार. 2 labs और हैं, बट ये 2 labs छोटी छोटी होंगी अब. So yeah, again I'm just gonna get close this. यहाँ पे तुम्हारा ऑलरेडी टिक मार्क आ जाएगा. ठीक है, हमारी थर्ड लैब फॉर द डे. We're gonna talk about cloud monitoring. And cloud monitoring say you can just see the performance, uptime or overall health आपकी cloud powered applications की. So cloud monitoring, it does nothing but it collects these metrics events जो metadata होता है from Google Cloud, AWS या फिर जो hosted applications होती हैं, इनसे इनका metadata collect करके and a variety of common application components too, like your Cassandra, ये Nginx, Apache web server. So you can create cloud, you can create alerts, you can do uptime checks. um, या तुम बस मॉनिटर कर रहे हो कि तुम्हारी मेट्रिक्स देख रहे हो कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग. सो लेट्स गो अहेड विद दिस टू स्टार्ट द लैब. ये वाली लैब ना मेरे को मतलब एस्थेटिकली अच्छी लगी देखने में, मतलब करने में भी बट देखने में अच्छा था. Password, and I'm gonna split my screen. Okay, we have to create a VM instance. I hope you guys remember compute engine पे जाके VM instances and then we hit the create instance button. ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाइड है. नेम में lamp1 VM. We're just gonna copy this and paste this. Region US Central 1, zone US Central 1 ये already है. Name of the series N1. Machine type N1 standard 2, also known as 2V CPU. And हमें firewall check allow करना है. Allow HTTP traffic and then just hit create और हमारा VM क्रिएट हो जाएगा. जब ये क्रिएट हो जाएगा चेक माई प्रोग्रेस कर लेंगे. नेक्स्ट हमें SSH कनेक्ट करना है. किसी को SSH की फुल फॉर्म याद है?
जब तक ये लोड हो रहा है, यस या नो। नहीं भी आती तो कोई बात नहीं। या जी, सिक्योर शेल। ग्रेट, हमारा ये लिंक हो गया। नाउ वी हैव टू लिंक द एसएसएच। तो कंटिन्यू। ये sudo apt get update. We have to first update the operating system, and we're gonna install Apache to web server, HTTP server. ये prompt मांगेगा, you press Y for yes, you want to continue, and then you restart the service. ये देखने में कितना अच्छा लगता है ना। Let's check our progress. If we go back and click the external IP link, then it should show a web page like this. This is the default web page कि तुम्हारा Apache 2 has successfully been installed on a Debian system. Debian क्या था? Linux. तो check my ये भी हो जाएगा। Cloud monitoring workspace. तो हम अब इस पर जाते हैं, वर्कस्पेस पे, मॉनिटरिंग की वर्कस्पेस पे। वी हैव टू go to the navigation menu and click monitoring. Here it is. एक सेकेंड लगेगा एंड वर्कस्पेस सेटअप हो जाएगी। या डैशबोर्ड इज रेडी। हमें मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग एजेंट्स अब इंस्टॉल करने हैं। तो एजेंट्स क्या करते हैं? दे जस्ट कलेक्ट योर डेटा और इसे सेंड करते हैं या फिर स्ट्रीम करते हैं इंफॉर्मेशन को क्लाउड मॉनिटरिंग पे। तो क्लाउड मॉनिटरिंग एजेंट is a collected based daemon. If you know what daemon is, great. If you don't, daemon is nothing but एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो रन करता है as a process, as a background process you can say. तो बैकग्राउंड में चल रहा है, यूजर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा इसका, एंड इट रन्स ऑन अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस इज मल्टीटास्किंग। मैंने एक जगह एक्सेल शीट खोली हुई है, पीछे डिस्कॉर्ड है, दो दो क्रोम टैब्स है। तो हाँ, daemon is nothing but a program जो बैकग्राउंड में चल रहा है, एंड अ कलेक्टेड बेस्ड daemon। तो कलेक्टेड बेस्ड डीमन क्या करता है? कुछ नहीं, बस सिस्टम और एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मेट्रिक पीरियोडिकली चेक करता है, मतलब मैट्रिक्स को चेक करता है, और प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म टू स्टोर द वैल्यू इन अ वैरायटी ऑफ वे। सो अगेन देर सेइंग द सेम थिंग कि देर सेइंग द सेम थिंग, सॉरी, कि दिस डीमन gathers system and application matrix from VM instances और उसे मॉनिटरिंग के लिए भेज देता है। So let's go ahead and install agents on the VM. हमें SSH में रन करनी है these commands. So SSH ये रहा, let's run them. अब हमने यहाँ पे मॉनिटरिंग एजेंट इंस्टॉल कर लिया। इट्स आस्किंग फॉर द prompt, you press Y, run the logging agent. अब हम लॉगिंग एजेंट को इंस्टॉल करेंगे इन द SSH ओनली। सो
SSH of our VM. So क्रिएट एन अपटाइम चेक. अब हम अपटाइम चेक क्रिएट करेंगे. क्लाउड कंसोल लेफ्ट साइड में अपटाइम चेक आएगा. लेट्स गो बैक. आई वांट यू गाइस टू सी इट लाइक दिस. अब मैं जो कह रही थी ना वो एस्थेटिकली प्लीजिंग वाला पार्ट, दैट यू विल सी नाउ. तो हिट दिस क्रिएट अपटाइम चेक. और what do we have to write? टाइटल ये डालना है. लैम्प अपटाइम चेक प्रोटोकॉल HTTP resource type instance. Title is this protocol HTTP resource type instance. Then applies to single lamp 1 VM. पाथ लीवर डिफॉल्ट सिंगल है. ठीक है. इंस्टेंस है लैम्प 1 VM. पाथ डिफॉल्ट छोड़ दो. ठीक है. फ्रीक्वेंसी चेक 1 मिनट भी है. ठीक है. नेक्स्ट. यहाँ पे दे स्पेसिफाइड रिस्पॉन्स टाइम और 10 सेकेंड लॉक चेक फेलियर्स ट्रू है. ठीक है. सेम है. नेक्स्ट. गाइज इन ना वैल्यूज का ध्यान रखना. मेक श्योर यू फिल दीज वैल्यूज प्रॉपरली, वरना ऐसे ही एरर्स आते हैं एंड में. फिर लैब पे तुम्हारा चेक या प्रोग्रेस करोगे तो फिर कुछ ना कुछ गलत आ जाएगा, वो एरर शो कर देगा. सो मेक श्योर तुम इन वैल्यूज को ठीक से फिल करो. फिर डिस्कॉर्ड पे मैं ये कहती हूँ ना कि तुमने कुछ कमांड गलत टाइप कर दी है या फिर तुमने पैरामीटर्स ठीक फिल नहीं किए हैं. We had to test it. Okay, shoot. Let's see. Can we edit this? हाँ, ठीक है. ये सब छेड़ना मत. I just forgot to test it. ये responded with 200 okay in 200 milliseconds. ठीक है. Let's save this. टेस्ट करके when you see a green check mark, it means ठीक है. वो ग्रीन आ गया था, उस पर हमने देख लिया था. क्लिक क्रिएट हो गया. Now we have to create an alerting policy. So whenever something goes wrong or whenever something happens, एक alert आ जाएगा आपको. So we have to go to alerting and click create policy and add condition. Okay. Alerting, create policy, add condition. क्या कंडीशन ऐड करनी है हमें देखते हैं. ओके. सेट द फॉलोइंग डिटेल्स. जो डिटेल्स इन्होंने स्पेसिफाई किए हैं वो डाल दो, बाकी फील्ड्स को डिफ़ॉल्ट पर रहने देना. सो टारगेट इज़ VM, रिसोर्स टाइप VM इंस्टेंस और मेट्रिक. एक मिनट आता हूँ उस पर. टारगेट इज़ VM इंस्टेंस, रिसोर्स टाइप इज़ what did they specify? VM instance, GCE instance. Okay. अच्छा वो तो हो गया. VM instance, metric we are seeing. metric network टाइप करोगे तो you will see a network traffic. Make sure 2 network traffic आएंगे. We have to see कि जो हम select कर रहे हैं उसकी API link ये हो. Let's see. मेरा नेटवर्क ट्रैफिक. देखो 2 नेटवर्क ट्रैफिक है. हमें कौन सा चाहिए जिसका लास्ट में बैकस्लैश करके नेटवर्क आ रहा है.
So we select this. Yeah, yeah. Configuration condition is above threshold 500 for 1 minute. Okay. For 1 minute, threshold is 500. Condition is above. Okay. And then click add and click on next. Okay. Click on add. Click on next. Okay, I think for now let's go back to this stuff. अब हमारे पास नोटिफिकेशन चैनल में देन click on drop down arrow next to notification channels, manage resources. ठीक है, manage notification channel resources. यहाँ पे हम alert डालेंगे, alert through email. So we have to add a new email. You can specify your personal Gmail या फिर कोई भी क्विक लैब्स वाली यूज़ कर लो जो अभी प्रोजेक्ट की है. And display name you can write whatever. So I'm gonna write my name. और अभी for now I'm going to use quick labs की email. Save. Okay, let's come back here. Refresh this. यहाँ पे आ गया तुम्हारा यूजर नेम वाला. And click this, press OK. Hit next. Alert name they have given it in this mention. Inbound traffic alert. This is the alert name. Hit save. And done. हमने alerting policy बना ली. Now we have to create a dashboard and a chart. So in the left menu, select dashboards, create dashboard, and we have to name it this. This is the part. This is very beautiful to see. You're gonna judge me on this. आधे लोग मेरे को पागल भी बोलेंगे. But I like this. डैशबोर्ड नेम, हाँ ये पढ़ लेना, इसको ऐसे काटना मत. यहाँ पे डैशबोर्ड नेम है. यू ऐड अ चार्ट ओवर हेयर. ये तुम्हारा डिस्प्ले मोड है. अगर तुम्हें मोज़ैक या फिर ग्रिड में चाहिए. हमारी जेसन पे ही एडिटिंग होती है इन चीज़ों की, तो जेसन एडिटर एंड ऑटो सेव ऑन हुआ है, तो यू डोंट हैव टू सेव एवरीथिंग ऑन योर वे, on your own, I mean. So just gonna paste this. And इन्होंने कहा है add a chart, तो we have to click on add chart, click the line option, chart का name ये देना है, and resource type ये instance. So add chart line. Chart का title is देखो चार्ट में यहाँ पे बेसिक मोड, यहाँ पे एडवांस मोड, MQL मोड, विजिट टाइप, व्यू ऑप्शंस. ग्रेट. चार्ट नेम ये था, रिसोर्स टाइप मेन इंस्टेंस था. मेट्रिक इन्होंने कहा है CPU लोड 1M. इसके लिए हमें ये टिक बॉक्स हटाना पड़ेगा, तो ठीक है. सी दिस. यहाँ पे ना ये ऑलरेडी चेक्ड होगा काफ़ियों का, ये चेक हटा लेना. एंड सर्च फॉर CPU लोड 1M. अगर यहाँ पे ये चेक आया होगा ना, तो ये आएगा ही नहीं CPU लोड वाला. सो मेक श्योर इट्स अनचेक्ड एंड select this. गाइज इन वैल्यूज़ का, इन पैरामीटर्स का
ध्यान रखना, अगर तुम एक एक स्टेप सही से फॉलो करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, हमारा ऐड चार्ट हो गया ऑटोमेटिकली। एंड अब हम सेकंड चार्ट, हमें कुछ सेव वेव नहीं करना, ऑटो सेव एनेबल्ड है। वी हैव टू ऐड द सेकंड चार्ट, अगेन लाइन, इसको नेम करना है रिसीव्ड पैकेट्स वीएम इंस्टेंस। ऐड चार्ट लाइन, चार्ट टाइटल इज दिस वीएम इंस्टेंस, और इसका मीट्रिक हमें सेट करना है received packets GCE instance, received packets received packets right here। ठीक है, डन, ये भी हो गया हमारा। हमारे चार्ट्स तैयार है और अब हम लॉग्स देखेंगे। सो लॉगिंग, लॉग्स एक्सप्लोरर, सिलेक्ट द लॉग्स यू वांट टू सी। ठीक है, तो इसमें जाते हैं, वी गो टू opening up। ठीक है, select the logs you want to see, you select the logs for lamp1 VM, click on resource और resources पे जाके VM instance lamp1 VM। ठीक है, resource पे जाएंगे, select resource, हमारा resource है VM instance lamp1 VM, add this, इसकी एक कमांड डलेगी, click the add button, leave the other field with the default value, click stream logs। I think I skipped a part. Okay, explain wait a second. Oh, I had to click the add button, I think. Did I click the add button? अच्छा, वो ऑलरेडी हुआ था, माय बैड। ठीक है, ये ऐड होते ही वी हैव टू क्लिक स्ट्रीम लॉग्स और हम अपने लॉग्स देख सकते हैं। हाँ, तो गाइज ये देखना, ये अच्छा पार्ट है, स्ट्रीम लॉग्स, और एक एक करके यू विल बी एबल टू सी ऑल द लॉग्स इट इज स्ट्रीमिंग। इट इज़ टेकिंग सम टाइम, चलो कोई नहीं, हमारी लैब एंड हो गई है इसके साथ। नहीं, अच्छा एक दो चीज़ें है लास्ट की। या ये लॉग स्ट्रीम हो रहे हैं और स्ट्रीमिंग पॉज हो गई है अभी। ठीक है, they're saying see what happens when you pause your VM, stop your VM, or when you restart your VM। तो
अगर हम ये हमारा ऑलरेडी एक और खुला हुआ है, सेम आईडी इसमें खुली हुई है हमारी. लेट्स गो टू कंप्यूट इंजन एंड वीएम इंस्टेंस. अगर हम जैसे यहाँ पे हम रीस्टार्ट स्ट्रीमिंग कर देते हैं, वापस से लॉग स्ट्रीम हो रहे हैं. अगर हम यहाँ पे इस पे यहाँ पे 3 डॉट्स पर जाके स्टॉप कर दें, तो हमने सिलेक्ट नहीं किया ये वाला वीएम पे. अगर हम इस वीएम को स्टॉप कर दें फ्रॉम रनिंग, तो यहाँ पे भी एरर आ जाएगा. दिस इज ऑल्सो शो एन एरर. यहाँ पे आ नहीं रहा है. बट आई गेस यू गाइस कैन ट्राई इट. तुम्हें दिख जाएगा. मेरे पास नहीं आ रहा. मेरे पास पहले भी नहीं आया था व्हेन आई ट्राइड इट अर्लियर. सी दिस. ऐसे से ना एक आ जाएगा कि बेटा इंस्टेंसेस कंप्यूट इंस्टेंसेस स्टॉप. और सिमिलरली व्हेन यू विल रीस्टार्ट इट, तो वहाँ पे स्टार्ट का आ जाएगा. सो लेट्स रीस्टार्ट और रिज्यूम दिस. इफ आई start or resume this, तो देखो ये रहा ना स्टॉप. कंप्यूट इंस्टेंसेस स्टॉप और कंप्यूट इंस्टेंसेस स्टार्ट. ठीक है. अगर हम अब टाइम चेक्स देखें मॉनिटरिंग में जाके, अब टाइम चेक्स देखें, क्योंकि हमने स्टॉप कर दिया था. लॉगिंग आई ओपन लॉगिंग बाय एक्सीडेंट. अच्छा टाइम चेक्स. अभी क्योंकि हमने स्टॉप कर दिया था तो यहाँ पे फेल स्टेटस आ रहा है. लेट्स क्लिक दिस. बट जब चल रहा था ना, तो अब टाइम चेक्स ऐसे आ रहे थे. देखो जब वो चल रहा था तो हर रीजन में जो चेक था दैट वाज कमिंग लाइक दिस. 5 मिनट वेट करोगे तो फिर यू विल सी इट अगेन. इफ दिस विल गो अप अगेन और ऐसे यू विल बी एबल टू सी दिस अगेन. ठीक है. अगेन अगर तुम अलर्टिंग में जाओगे तो यहाँ पे अलर्ट्स आ रखे होंगे कि स्टॉप हो गया या रिज्यूम हो गया. इवन अगर तुम जीमेल चेक करोगे तो जीमेल पे भी अलर्ट्स आ रखे होंगे. सो या दिस कंक्लूड्स आवर लैब. हमने यहाँ पे मॉनिटरिंग की बात करी. फर्स्ट लैब में हमने स्टोरेज की बात की थी, सेकंड में आईएएम, थर्ड में मॉनिटरिंग और लास्ट लैब ऑफ द डे जो एज यू कैन सी यहाँ पे आएगा 15 मिनट्स की लैब है. सबसे छोटी लैब क्लाउड फंक्शंस की लैब है. क्लाउड फंक्शंस क्या होते हैं? इट्स जस्ट अ सर्वरलेस एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट. सर्वरलेस मतलब तुम्हें सर्वर की टेंशन ही नहीं है, सर्वर का कोई रोल ही नहीं है. तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम होते हैं ना, सीपीयूज एंड ऑल, ये सब तुम्हें बिल्कुल मैनेज नहीं करना. इट्स अ सर्वरलेस एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट फॉर बिल्डिंग एंड कनेक्टिंग क्लाउड सर्विसेज. ठीक है. एंड यू राइट सिंपल सिंगल पर्पस फंक्शंस जो अटैच होते हैं टू इवेंट्स एमिटेड फ्रॉम योर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर. इसको हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं और ये एग्जीक्यूट होता है नोड.js एनवायरनमेंट में ऑन गूगल क्लाउड.
सो नोड जेएस रन टाइम में ये एग्जीक्यूट होता है एंड यू जस्ट हैव टू राइट अ सिंपल फंक्शन और सर्वर की टेंशन नहीं लेनी और सब कुछ अपने आप हैंडल होता रहता है यहाँ पे. या provides a connective layer of logic that lets you write code to connect and extend cloud services. You can listen and respond to a file upload to cloud storage, a log chain या फिर कुछ भी pub sub related. तो ये देखो ये important है. Cloud events are things. Cloud events क्या होते हैं? These are the things that happen in your cloud environment. जो जो चीज़ cloud environment में होता है उसे हम event बोलते हैं, cloud event. और क्लाउड इवेंट का जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम ट्रिगर बोलते हैं. सो अ ट्रिगर इज अ declaration that you are interested in a certain event or set of events. Again, serverless is it means that you don't have the work of uh, managing servers, configuring software. ये सब चीज़ें का काम नहीं है. Yeah, you can read these things on your own. हम आगे लैब पे चलते हैं. सिंपल सी चीज़ है. विल क्रिएट अ फंक्शन, विल डिप्लॉय द फंक्शन और फंक्शन को टेस्ट करेंगे, लॉग्स देखेंगे, काम खत्म. जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट. इट्स ऑलमोस्ट डिनर टाइम ना. आई एम सो सॉरी, आई एम होल्डिंग यू बैक. फटाफट से फिनिश कर लेते हैं. आई कैन सी मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी लेफ्ट. जो जो बैठे हैं, थैंक यू फॉर बीइंग देयर. फटाफट से इसको ओवर कर लेते हैं. अच्छा क्यों मांग रहा है? ये ऑलरेडी चलता है. Is that even a bridge? अच्छा चलो छोड़ो. Let's close this one. Let's close this one. Next. आज सारा टाइम ना एक तो वो अनाउंसमेंट्स एंड ऑल में लग गया एंड मेरे नेटवर्क इशू में. So in the console, click to navigation. Click on navigation menu, cloud functions. ठीक है. agree. ठीक है. cloud functions main पे ऊपर ही है. Yeah, here it is. Serverless में cloud functions. Let's create a function. यहाँ पे create का prompt आएगा and these are the values. Create a function. Function name. रीजन बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है उसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो. HTTP एंड क्लिक सेव. on this run time build connections इन सब में क्या फिल करना है. MB allocated, ये MB है, ये इनका टाइप हो गया यहाँ पे. ये this was 256 MB, टाइम आउट 60 seconds. आई थिंक यहाँ पे भी यही है. We can do next. कोड में जाके we have to choose inline editor और hello world. inline editor है, hello world है, ठीक है. and click deploy.
The console redirects to Cloud Functions overview page. जब ये check mark आ जाएगा means everything is fine. So let's see. The runtime environment Node.js. हाँ यार लोड हो रहा है. I'm so sorry guys, तुम्हारा डिनर टाइम ऐसा हिंडर हो गया मेरे चक्कर में. हो गया ये. यहाँ पे टिक मार्क आ ही जाएगा. Yeah. Let's test this function. You click on these three dots, test function. नीचे ये ऐसा सा मैसेज शो करेगा. But for that, wait, we have to type in the command. Actually, we have to type in this command. So this is the function. या आउटपुट आ गया. लॉग्स फेच कर रहा है. लॉग में अगर 200 स्टेटस कोड आता है देन इट मीन्स सक्सेसफुली हो गया डिप्लॉय. Something like this. Finished with status code 200. So the logs are loading. Finish with status code 200. Yeah, ठीक है. Let's view the logs. वापस function details पे जाके we have to click on view logs. हम खत्म. So go back. Okay, click here. And let's view the logs. Yeah, GCF function. Yeah. Everything is working perfectly fine. Yeah, नीचे एक दो quiz आई है for those of you who are still here and still listening to me. Cloud Functions is a serverless execution environment for building and connecting cloud services. Serverless environment, execution environment है या नहीं? True or false? I'm gonna wait for only a minute. अगर किसी का नहीं आया रिस्पॉन्स तो आई विल अंडरस्टैंड कि तुम लोग नहीं सुन रहे, तुम लोग रिकॉर्डिंग देखोगे. तो आई विल आंसर दीज एमसीक्यूज माई सेल्फ ओनली. Oh great. People are there. Great, true. Yeah, it is true. Which type of trigger is bound while creating cloud function in the lab? HTTP trigger, cloud storage. Again, I don't think as such इसके बारे में statement थी. But what do you think? क्या होगा? हमने इनकी तो बात की ही नहीं है तो leave this out of the choice. इन दोनों में से हमने एक्चुअली एक उसमें भरा था, फील्ड में भरा था ना हमने. HTTP, let's go with HTTP. Kashish said HTTP, so let's go with this. Yeah, great Kashish and Sanjana.
ग्रेट गाइस, आज का हमारा एंड हो गया। सबमिट। ये लैब बंद नहीं हो रही, जस्ट क्लोज इट। यहाँ पे तुम इसको जब रिफ्रेश मारोगे ना तो तुम्हारे पास टिक्स आ जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो एज यू कैन सी 4 हो गई हैं हमारी और 2 ही बची हैं, एक ये वाली पब सब और एक हमारा चैलेंज लैब। सो इनके रेफरेंसेस आर इन दिस इज इन दिस शेड्यूल पीडीएफ। सो यहाँ से तुम चेक भी कर सकते हो name of the lab and click on this YouTube reference, open it, uh, go through this reference or complete the lab. If you don't want to, I would say to be very honest, यहाँ पे जो इनके steps लिखे हैं just follow the steps and तुम्हारा खुद से ही हो जाएगा। But still मैंने सोल्यूशन का भी रेफरेंस शेयर कर दिए तुम लोगों के साथ। इन केस तुमसे स्टिल ये सोल्यूशन का रेफरेंस फॉलो नहीं हो पाता तो आई विल ट्राई टू लुक फॉर अ वीडियो। बट यहाँ टुमारो यू हैव टू आज ख़त्म कर लेना ये 4 लैब्स एंड कल में यू हैव टू फिनिश नेक्स्ट 4 लैब्स। सो लास्ट का ये सेकेंड एंड देन नेक्स्ट क्वेस्ट की स्टार्टिंग की 2 लैब्स। सो यू कैन ईदर सी फ्रॉम हेयर, यहाँ से लिंक ओपन कर सकते हो लैब 13 एंड लैब 14, या फिर इफ़ इट सीम्स ईजियर टू यू यू कैन गो बैक हेयर। हमारी सेकेंड क्वेस्ट ख़त्म हो जाएगी और थर्ड क्वेस्ट की स्टार्टिंग की 2 लैब्स तुम इस शेड्यूल से क्रॉस चेक कर सकते हो, लैब लिंक्स एंड लैब नेम्स जो हमें करने हैं। क्योंकि रिमेंबर यहाँ पे ये जो और की चॉइसेस है ना, दिस और दिस और दिस, तो वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट चॉइस। अगर इन 2 के बीच में है तो हम ये वाली कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 4 चॉइसेस है ना, 1 2 3 और एक और है नीचे, तो हम फर्स्ट वाली ही कर रहे हैं। सो मेक श्योर यू क्रॉस चेक दैट। अगर नहीं भी करोगे, अगर तुम कोई और खुद से कर लेते हो तो वो भी ठीक है, एज लॉन्ग एज यू कंप्लीट वन ऑफ दीज चॉइसेस, तो ठीक है। लास्ट 2 labs of this quest and first 2 labs of this quest, I would expect you guys कि तुम खुद से कर लोगे। So next live session में we will be covering the next 4 labs. उसमें हमारी थर्ड क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगी एंड एज यू कैन सी some of these labs are interconnected। जो labs एक दो इस क्वेस्ट में थी वो एक दो इस क्वेस्ट में भी है, तो तुम्हारे लिए भी आसान है, मेरे लिए भी आसान है। So yeah, this is the schedule coming back here. We are done with this day। 4 लैब्स आज कवर हो गई, 4 आप कल खुद करोगे। आप ग्रुप लीड्स के साथ अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। आई विल आफ्टर डिनर आई विल रिलीज द लिस्ट ऑफ group leads and the students under them. They will take up your doubts. If they are still not able to solve your doubts, I will take your doubts, don't worry। ज़्यादा बात होगी तो हम वॉइस चैट पे आके स्क्रीन शेयर आप लोग कर लेना, हम वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लाइव विल बी ऑन 7th। सो 7th इज आई थिंक थर्सडे, या थर्सडे। तो थर्सडे को हमारी ये थर्ड क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी, सेटअप वाली, सेटअप एंड परफॉर्म, सेटअप एंड कॉन्फ़िगर अ क्लाउड एनवायरनमेंट। ग्रेट, यही स्पीड चलेगी गाइज हमारी 21st तक। सो आई वुड एक्चुअली जेन्युइनली रिक्वेस्ट यू ऑल कि साइड बाय साइड करते रहना, वरना टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएंगे और स्वैग्स, गूगल का सर्टिफिकेट और गूगल की गुडीज नहीं मिल पाएंगी। And as a humble, gentle reminder, we will be picking top 50 students. So top 10 students from each group जो पहले कंप्लीट कर लेंगे both of these tracks, उनको स्पेशल प्रेफरेंसेस दी जाएंगी। So yeah, that was it for today. Thanks for sticking with me. दीदी मेरी रोज़ क्लास छूट जाती है, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है। यार सिंग बीस्ट मैंने पिछले 2.5 हफ्ते से एक कॉलेज क्लास अटेंड नहीं करी है बिकॉज आई हैव टू
study all of this on my own first, then take your live sessions, and then I have trainings from Google people too. तो गूगल के इंजीनियर्स भी ट्रेनिंग देते हैं, वो भी अटेंड करनी है. और अपार्ट फ्रॉम दैट एक दो चीज़ें और चल रही है, तो यार ऑल आई एम सेइंग इज आई एम इन वी आर इन द सेम बोट. तो करना पड़ेगा यार. पता है, अगर तुम इतनी बड़ी चीज़ अपने रिज्यूमे में लाना चाहते हो ना, इफ़ यू वांट गूगल के स्किल बैचेस जो जिनके लिए $300 $500 के क्रेडिट्स खरीदने पड़ते हैं लोगों को, यू आर गेटिंग दैट फॉर फ्री. या और एक गूगल का सर्टिफिकेट. गुडीज तो खैर छोड़ो, सर्टिफिकेट और स्किल बैजेस तुम्हारा रिज्यूमे जितना एनहांस करेगा ना, अगर उसके लिए 1 महीने का हेडेक है ना, तो बेयर विद इट यार, तुम्हारा ही फायदा है उसमें. मेरी भी मतलब देखो, आज तबीयत बहुत खराब थी, मेरा कांस्टेंट हेडेक हो रहा है स्टिल. वी आर हियर, वी आर टेकिंग द लाइव सेशंस एंड ऑल. तो फायदा किसका है? फायदा तुम्हारा और मेरा. हमारा रिज्यूमे अपग्रेड हो जाएगा. आगे कल को जॉब में बैठोगे तो रिज्यूमे की जो स्क्रीनिंग होएगी ना, उसमें इट्स हाईली लाइकली तुम्हारा रिज्यूमे आगे फॉरवर्ड हो जाए लोगों को, बिकॉज गूगल का ठप्पा लगा हुआ है. सो मैनेज कर लो यार, टीचर से बात कर लो, करना पड़ेगा. कॉलेज में तो अटेंडेंस शॉर्टेज की वजह से बैक लगने वाली है. पता है, सेम. यू वोंट बिलीव मी, मेरी लास्ट सेमेस्टर इतनी बढ़िया CGPA आई थी, एंड दिस सेमेस्टर आई एम लाइक गया, सब गया. बट यार कोई बात नहीं, साइड बाय साइड करते रहो. अटेंड द लाइव सेशन. अब तो तुम्हें जो आ गया, अब बस घंटा 1.5 घंटा बैठो और तुम्हारा ये 4 लैब्स आज ही खत्म हो जाएंगी. अ, बाकी वो खुद से कर लेना, उनमें भी 2 to 3 hours लगेगा पर डे. इसीलिए रात की टाइम सेट करिए, तुम दिन में कॉलेज अटेंड करो और रात को लैब्स फिनिश करो. ठीक है यार. लेट मी स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन. मेरा कैमरा नहीं ऑन हो पा रहा. ग्रेट. ठीक है यार. बाय बाय. हैव डिनर एवरीवन. कंप्लीट योर लैब्स. कंप्लीट योर क्वेस्ट, अर्न योर स्किल बैजेस. टॉप 50 में आ जाओ. GDSC की प्रेफरेंसेस ले लो, बहुत काम में आएंगी आगे, आई स्वेयर. एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. ओके देन. Bye everyone, and thanks for staying till the end. I really appreciate all 13 of you. मतलब बाद में तो लोग देख ही लेते हैं, but if you're staying, thanks. Yeah, good vibes, Tamanna. Bye.